Thank you so much, Tagam. Ladies and gentlemen, the next session that we're going to begin is session 2, that is APUAPA, Arunachal Pradesh Unlawful Activities Prevention Act, APUAPA. But before we start the technical session, we would like to felicitate the resource person for the conclave. We had felicitated the other speakers in the morning, so they were here with us in the first session as well. So ladies and gentlemen, please join me in welcoming Ms. Mina, Toko, Vice President, Arunachal Pradesh Congress Committee. And to give you honors, I would like to invite on stage General Secretary General Secretary AEDMA, to come up on stage. So ladies and gentlemen, Toko Mina, Vice President, Arunachal Pradesh Congress Committee. Thank you so much, ma'am. Ladies and gentlemen, once again, welcome. This is AEDMA Conclave 2023 with the theme Digital Media as a Catalyst for Social Change. The event is being organized by AEDMA in collaboration with Department of IPR and supported by Department of Youth Affairs and Hydropower Development Corporation of Arunachal Pradesh Limited. So without further ado, we will start with the second session, that is Arunachal Pradesh Unlawful Activities Prevention Act, a boon or a bane, and we have again galaxies of brilliant speakers, resource person for this session. So I would like to just read out the name of the panelists, of the speakers, of the resource persons here. First we have Mr. Bengia Ajum, Vice President APC and Assistant Director Arunachal Times. A big round of applause. Advocate Mili, Member Human Rights Law Network. Mr. Dominic Tadar, Spokesperson, State BJP Unit Arunachal Pradesh. Ms. Toko Mina, Vice President Arunachal Pradesh Congress Committee. And to take over this session, I would like to request the moderator for this session, Mr. JP Tagam, to kindly take over this session. Hello. Good afternoon, everyone. Welcome back to the second session of AEDMA Conclave 2023, organized on the eve of 11th AEDMA Foundation Day. I'm JT Tagam, the President of AEDMA, as well as the moderator for the second session. So the topic for the second session is APUAPA 2014. Is APUAPA 2014 a boon or a bane in the state? As you can see, the theme for our conclave is also the digital media as a catalyst for social change. I forgot to mention in my welcome address. Iska matlab ye hai ki the role of media, how media can play a role in transforming the society. So to discuss and deliberate on this particular topic, I have with me 4 eminent speakers from the field of media, politics, and legal activist background. So my first speaker today is a journalist with a spine, escorted by Tatum, and the Vice President of our National Press Club, as well as the Assistant Editor of Arunachal Times. Please welcome Bengia Ajum to the stage. And my second speaker today is a person who is a very prolific speaker and from the Saffron Party, and is also who has contested the ones from the Sagali Assembly constituency. Please welcome Shri Dominic Tadar, Spokesperson of State BJP Unit Arunachal Pradesh. And the third speaker today is a lady sometimes called as the Iron Lady of Arunachal Pradesh Congress Committee, and a very vocal and vociferous speaker and an alumni of JNU. Please welcome Mina, Toko, Vice President of Arunachal Pradesh Congress Committee, to the stage. And my fourth speaker today is
legal background, an advocate who is usually known for activism in the field of environment and human rights activities. So please welcome Advocate Mili, the member of Human Rights Law Network. I'm sure everybody, हर किसी को पता है APUAPA क्या है. As of now, what is the situation in Arunachal? Is this act the right act to minimize unlawful activities in the state, or it is an act to sabotage or suppress the voice of the people? So, all the speakers present here, I would like to make an opening remarks. I will give 5 minutes each one of you, and this question is common for every one of you. So my first question is APUAPA the right act to minimize unlawful activities in the state, or it is a political tool to sabotage and silence democratic voices in the state? I would like to begin with Shri Bengia Ajum. Good afternoon, everyone. I guess it's too late in the afternoon and everybody must be very tired, so I'll keep it very short. The topic is like, is APUAPA boon or bane? I mean, that's a general topic. I guess it's not for me to answer this. It's for Congress and BJP to answer, because Congress is responsible for bringing it and BJP is responsible for implementing it. I'll speak as a journalist from my journalistic point of view. जो मैंने देखा है journalist इसको cover करते हुए in the last few years, what I've seen is that इसका तो misuse तो होता है and हो भी रहा है, and where I would like to emphasize on human side of this misuse of this law. We have seen recently this APUAPA, so many young aspirants were picked up under this law and they were kept under the bar for more than a month also. So like at that time, I was doing a story about them and I happened to meet few of the family members also. So one of the family members of the victim came and met me and like she was literally crying. She was like, Ajum sir, हमको मालूम नहीं है कि ये law का अंदर में हम advocate भी hire नहीं कर सकते बोला. That's the worst part about this law. And she was crying and like family was going through a trauma actually. They had no way कि they have no reach कि हम ऊपर वाला को जाके बात करेगा, उधर बात करेगा, वो नहीं था. Because if you have gone, I'm sure all of you must have gone through the provision of this law. This law gives absolute power to the authorities. Secretary level or DM level officers can, anybody can like just use this law to put someone behind the bar. अभी हमको लगे कि ये आदमी मजा नहीं लगता, कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, चलो इसका कुछ निकालते हैं खामियां, and I can put him behind the bar under this law. We've just seen, I mean like recently these people wanted to conduct some social service there, and the person who wanted to lead the social service has been put under APUAPA. I mean, that's a classic example of misuse of this law. No amount of justification can justify that. Our DC sir was giving all the justification, but I'll still very respectfully disagree with him कि वो justification नहीं होता है. And इस law का अंदर में हम लोग ने ये भी चीज देखा है कि इसमें if someone wants to get out, of course there is a provision कि he and she can be given some kind of respite by the government. But उसमें भी ये है कि you have to surrender yourself in front of authority, that you have to sign a bond that I'm not going to do this and that thing. It's like literally takes away your liberty. आपको future का जो आप आने वाले दिन में जो करने जा रहा था वो खत्म कर देता है आप उसमें. And इसमें one more thing that I have seen from a personal experience is that this law breaks the spirit of the people. This bunch of youngsters who were like fighting for this APPCPSCO, they were so vocal before they were booked under this APUAPA. And after coming out, I met few of them and they're like literally they're broken actually. They're all बोलते हैं कि हम लोग का spirit खत्म हो गया लड़ने का ना. So this is how it is. So like this law, I mean let them decide, because just give me 1 second. I mean like ये और भी interesting. I want to listen from political parties representative, legal point of view का तो ये वो बोलेगा. APUAPA, for your kind information, is kind of replica of APUAPA. आप लोग ने किसी ने पढ़ा APUAPA 2002 में मिति गवर्नमेंट ने लाया था. And that time, interestingly, if I'm not wrong, actually Dominic was the APSU president. He had vehemently opposed that time उस समय में इस law को, and was repeal भी हो गया था. If I'm not wrong, maybe आप president था ना, but he was very active member of APSU. I remember क्योंकि हम लोग भी उस समय class 10 ना 11 में था, हम थोड़ा याद है वो उस चीज को. APUAPA moment के लिए हमको जेल उतार के पुलिस भी ले गया था, ऐसा रास्ता में घूम रहा था. So I just want to hear from these people also. I will get back to you again with few questions. So, Dominic sir, what is your take on this particular act? As your party is in the government?
Thank you for this opportunity, and everyone present, and my friends who are here with me, Mr. Moderator, and dear friends and students. Let us be specific to the topic, boon or ban, and Mr. Ajum has talked about APUAPA also. Yes, I was president of APSU, and it is not me who got repealed this draconian law, but it was students' movement. Only I was in front, that's all. So, Tagam, one of the popular activists, is here for repealing this draconian APUAPA. It's like APUAPA and APUAPA, there's a great difference. बहुत ज़्यादा difference है. But let us talk in a very simple way. Complicated नहीं बनाना है, जैसे कि आजुम ने बोला है. क्योंकि लॉ के बारे में बात करने के हमारा एडवोकेट साहब बैठा हुआ है. I am also a legal student, but I am not a regular practicing advocate. So I think a regular advocate will be able to interpret in a better way regarding this APUAPA. मुझे तो ऐसा लगता है कि APUAPA में देखिए, it is very loosely made act, but the punishments, restrictions, fine 1 लाख से 5 लाख, उसके पश्चात death sentence, life imprisonment. These were the restrictions, impositions that the government could do in APUAPA. So that's why we called it at one as a draconian law. That's a great difference between it. And I like to cite one example regarding this. You have heard about this Armed Forces Special Powers Act, where under the disturbed area, the army, the forces, they can enter, they can search without any warrant, and they can arrest anyone. And even they can shoot also. Shoot at sight can also be possible under Armed Forces Special Powers Act. And this act, of course, it is draconian for public purposes, but it is reasonable for the reasons that is known to the law enforcers. अभी जो है APUAPA जो है, it is a very simple law. मुझे सुनने को आया कि ये draconian है, वो है, ये है. मुझे तो लगता नहीं ये draconian law है. मुझे लगता है कि majorly it is a law which has been made by a state government. I will not, of course, blame the Congress. It was made in 2014 under the Congress regime, but it is not a bad law, according to my observation. ये जो about मतलब सीधा सारा law है, it is majorly to prevent certain unlawful activities in the capital complex and around the state also. जैसे कोई बांध कॉल करता है, जैसे कोई आदमी आ गया, किसी का दुकान को उड़ा दिया, सरकार का जो ताकत को नहीं लेते हुए, परमिशन नहीं लेते हुए, जैसे कोई ड्रग ट्रैफिकिंग भी है, इमोरल ट्रैफिकिंग भी है, इमोरल ट्रैफिकिंग को भी अप्लाई करता है, ड्रग ट्रैफिकर्स को भी अप्लाई करता है, इट अप्लाइज टू ड्रग ट्रैफिकर्स ऑल्सो. उसके पश्चात वो जो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन करने वाला को भी सिर्फ और सिर्फ आदमी को रोकने के लिए, जो कानून के खिलाफ काम करता है, आदमी को रोकने के लिए ये जो है APUAPA को बनाया गया है, अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन है, टू प्रिवेंट समवन और एन एसोसिएशन फ्रॉम क्रिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर, फ्रॉम थ्रेटनिंग, फ्रॉम पुटिंग समवन इनटू फियर, or to indulge in drug trafficking, जैसे drug production, जैसे selling, जैसे all sorts of business which is likely to cause danger, which is likely to cause danger to the society as a whole. और उसके पश्चात आपके जो detention, it is all about detention, detention and detention. Maximum period of detention is 6 months. Beyond that you can't go. So ऐसे करके क्या है कि इसमें आपको एक्ट बनाया है कि any person who is found to be unlawful or dangerous for all the law purposes, उसको एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और
स्टेट सेक्रेटरी का रैंक गवर्नमेंट का, ये दोनों को ऑथराइज किया जाता है. इवन सरकार इज ऑल्सो ऑथराइज्ड टू डिटेन अ पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम कमिटिंग दैट क्राइम, डेंजरस क्राइम और क्रिएटिंग फियर साइकोसिस इन सोसाइटी. और बाजार में भी हो सकता है. उस आदमी को डिटेंशन करके एट द मोस्ट 5 days to 10 days डिटेंशन करेगा, देन इट इज फॉरवर्डेड टू द गवर्नमेंट, देन एडवाइजरी बोर्ड सरकार बनाते हैं. Under the chairmanship. Sorry to interrupt. My question was, is it the right act to minimize unlawful activity, or it's a tool by the government to sabotage the democratic voices in the state? No, it cannot be called as a tool to sabotage the democratic voice in the state. It is basically an act, what I see, it is basically an act to minimize the unlawful activities in the state. That is what I see. So you look at, because some people are calling it is draconian. According to me, it is not draconian. It is all about detention only. Detention is also only up to 5 to 10 days, and the reason for detention is being sent to the detainee and to the state government, and within 3 weeks period, it is forwarded to advisory committee. Advisory committee is led by the retired judge of a high court. Sir, I will get back to you with few other questions in the second round of the question. Now let me go to the Congress representative over here. See, Mina, Toko, this is an act which has been brought by your party in 2014. I said in order to minimize the... Actually, this morning I have been going through the act, and I found that in context of Arunachal, it is actually for some individuals and unions and association. क्योंकि हमारे राज्य में धरनाबाजी ज़्यादा होता है, बंद कोल ज़्यादा होता है. Maybe that was one purpose to legislate this act. So the same question is applied to you as well. What do you see, how do you see it now? Do you see it as a tool by the present government to minimize to sabotage the democratic voices? सुनाई दे रहा है ना? नमस्ते आप सभी को. सबसे पहले आई विल टेक 10 minutes सिंस इट इज ओनली 5 minutes इज अलाउड, क्योंकि सबको समझना पड़ेगा व्हाट इज अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट. तो सबसे पहले देखिए, हर कानून बनता है संविधान के हिसाब से. आज हम यहाँ है तो संविधान के हिसाब से ही है. हमारा सरकार है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या इंडियन नेशनल का, वो संविधान के तहत है. ठीक है, तो उसी संविधान को लेकर मैं कहती हूँ, दर्जनों भाषा है, सैकड़ों विधि है, ठीक है, हजारों विधान है, तो सबको जोड़कर क्या बनता है? संविधान बनता है. सबसे पहले ये संविधान से निकला हुआ ये एक्ट को समझना बहुत जरूरी है. तो ये जो हमारा अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 है, इसको बनाया गया था क्योंकि उस समय भारत की स्थिति ऐसी थी कि हमें चाहिए था कि जो स्टेट सोवरेनिटी, संपूर्णता, क्षेत्रीय क्या कहते हैं उसको, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, वो सबको संभालने के लिए, क्षेत्रीय अखंडता को संभालने के लिए, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड द कंट्री, उसके लिए बहुत जरूरी था. स्पेशली इन अरुणाचल, जब हमारा यहाँ वॉर चल रहा था 1962 को चाइना के साथ, तो उसमें 1967 का ये लॉ आया. ठीक है, ब्रिटिश के जमाने से इसका हिस्ट्री जो इतिहास कनेक्ट होता है, दैट इज देयर. मैडम, सॉरी टू इंटरप्ट, कैन आई स्टिक टू अरुणाचल इन कंटेक्स्ट ऑफ अरुणाचल? तो उसी के हिसाब से क्या हुआ कि वो लेके आया. लेकिन इसमें क्या था कि अभी जैसे 2019 तक जो अमेंडमेंट हुआ है, इसमें लिखा है कि एनी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग एसोसिएशन, इफ दे आर कनेक्टेड टू अनलॉफुल एक्टिविटी, उनका प्रिवेंटिव डिटेंशन होना या फिर कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करना, ऐसा अमानवीय तरीके का इस लॉ को बनाया गया है अमेंडमेंट लाके. लेकिन 1969 में जब अमेंडमेंट हुआ था, 67 से लेके, इसमें इंडिविजुअल की बातें नहीं आती थी. बैन ऑन द एसोसिएशन विथ अनलॉफुल एक्टिविटी, ये था. इसके बाद 1969 के बाद यहाँ पे 2004 को टेररिज्म का वर्ड आया. फिर 2008 को क्या आया? ऑफेंसेस डन बाय कंपनीज ना. 2014 को 2008-14 को लेके ऑफेंसेस डन बाय कंपनीज, टेररिज्म. फिर इसके बाद और भी बहुत सारी चीज आए, बहुत सारे टाडा पोटा, फिर क्रिमिनल एक्ट को
अमेंड करके फाइनली 2019 में हमारा ये एक्ट आया, रिफाइन होकर बहुत अच्छी तरह से, इतनी अच्छी तरह से रिफाइन होके आया कि इंसान का जीना मुश्किल हो गया। एक सरकार जो है वो अपने लिमिट से बाहर निकल गई। अब आपको पता है 2 गवर्नमेंट के बीच में ये टसल रहा, ये एक्ट आया। तो ऐसा करके 2019 में क्या हुआ, इंडिविजुअल अरेस्ट भी शुरू हो गया, उसको कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जाता। बैन एंड बून एंड बैन ना, तो अभी ये बून एंड बैन का सवाल आपके ऊपर मैं रखती हूँ पूरे कहानी सुनाने के बाद। तो 2019 में ऐसा रिफॉर्म आया कि आपका इंडिविजुअल अरेस्ट होने लग गया। इंडिविजुअल को भी आप आतंकी के शक पे, डाउट पे आप अरेस्ट करके विदाउट एनी लीगल रेमेडीज आप कितने समय तक रख सकते, 3 साल तक तो रखते हैं, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी है, डेथ पनिशमेंट भी है इस एक्ट के अंदर। तो वही सेम जो कॉपी करके अरुणाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी आ गया, ठीक है, तो उसका बड़ा जोरों शोरों से यूज हुआ। अब ये बून कैसा है मैं बताती हूँ। इस एक्ट को चैलेंज करने के लिए हमारे पास हीवियस कॉर्पस रिट फाइल किया जा सकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ना, वैलिडेशन, संवैधानिक वैलिडेशन को अप्रूव करता है ये एक्ट का, ठीक है। ये एक है बून के हिसाब में हेवियस कॉर्पस, पता है ना ये रिट, इसका मतलब है प्रोड्यूस द बॉडी, अनलॉफुल डिटेंशन नहीं हो सकता, कोर्ट के सामने उस बंदे को प्रेजेंट करो। मैडम, ये एक्ट के बारे में आई थिंक ज्यादातर को पता है। आई थिंक एक्ट इज अवेलेबल ऑन पीडीएफ आल्सो, आई थिंक इट्स इन एवरी मोबाइल। मेरा कहना यह है कि इज गवर्नमेंट यूजिंग जुडिशियसली और इन, अभी बताते हो, दिस वाज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग दिस 72 आवर बन कॉल। हीवियस कॉर्पस के बारे में किसी ने बात नहीं किया। फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन क्या होता है, आपका जो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट में 10 सेक्शन 10(1)(a) के अंदर आता है कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, वो वैलिडेशन देता है। और एक है आपका, आई विल कम टू दैट पॉइंट लेटर, इसमें आपका क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर ये एक्ट वैलिड है, उसको कोई भी स्टेट यूज कर सकता है। दिस इज द लॉजिक आर्ग्यूमेंट which we can consider as a boon. अब बैन क्या है, ये श्रापित है ना वरदान है। बैन क्या है, बैन में आपका फंडामेंटल राइट्स टू स्पीच, एक्सप्रेशन 2019 के बाद आप नहीं कर सकते हैं। voluntarily assemble of any organization without any arms, without provoking any गवर्नमेंट, एंटी गवर्नमेंट या किसी पब्लिक को, आप वो नहीं कर सकते हैं। ये मॉडिफाई हुआ है 2019 के बाद। तो मेरा कहना ये है कि आज एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को नहीं लेकर, लेकिन उस पार्टी का मेंबर होकर जो जनहित में काम करता है, मैं कहती हूँ 2019 से पहले दिस वाज अ बून इन टर्म्स ऑफ, इन द इंटरेस्ट ऑफ कैटरिंग स्टेट इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी। लेकिन 2019 के बाद ये जो एक बैन बना है, क्योंकि आप बोलते हो, यहाँ हमारा वकील साहब है, ही विल टॉक अबाउट इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, ठीक है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जब ये कानून, आप लोगों को जानना पड़ेगा, एस्टैब्लिश हुआ था, ये कानून जब एस्टैब्लिश हुआ था, ये सब को कर्टेल नहीं किया गया था। दिस वाज अंडर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, जिसको कहते हैं ना कंसिडरेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड, क्या था, पब्लिक ऑर्डर एंड गुड रिलेशन विद द स्टेट, जो कि एक्सप्रेशन को और स्पीच को आपको लिमिट करता है, लेकिन according to public order and in good relation with the state. I will get back to you. So this is your opening remarks. अभी questions बहुत बाकी है. This is the thing. After 2019, this has become a ban. So now the thing is on the public to understand whether it is boon or ban. ठीक है, we'll come back again. Now let me move to Advocate Mili. You have been in the news recently for raising, especially on the, many people were vocal, but I have seen you as one of the an advocate
who have come to press club and has been giving a lot of press briefing as well. So how do you see this act as of today? Is it being misused, or is it the right thing is being done in the state? Yes, it's been misused, at least in the context of Arunachal. And even in the national level, if you pull up the chart, sir को तो statistics बहुत पसंद है, जैसा बताया था. तो if you pull up the chart statistics, उस पे देखा जाएगा 80% of those जितना use किया गया, it's a political tool to arrest the journalists, to arrest the activists. तो अगर आप पूछेगा कि it's basically it's a curse. And sir, with all due respect, Dominic sir से हम disagree करते हैं ना, क्योंकि basically this law, when I say, or when people say it's a draconian law, तो जैसा मैडम जी ने बताए थे, तोको मैडम ने बताया था कि संविधान का हिसाब से ही ये लॉ को बनाया गया है. तो जस्ट लाइक दैट जब डोमिनिक सर बोलते हैं कि इट्स नॉट ड्रैकोनियन लॉ, इट्स नॉट बैड लॉ ना, तो इट्स डिपेंडिंग ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द पीपल. लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कि संविधान तो बहुत कुछ बोलता है. से सपोज अभी रिसेंटली फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट बिल पास किया गया है, तो बेसिकली इतना मेजोरिटी हो गया कि गवर्नमेंट पे कि यूं ही बिल पास किया जा रहा है. रिसेंटली आपने सुना होगा द फार्मर्स बिल, उसको भी कितना ओपोज किया है, लेकिन चला गया सीधा ये कश्मीर को लेके. तो संविधान के हिसाब से तो बहुत कुछ बनता है बनने के लिए, और इट्स फॉर वी पीपल. सो इट्स वी टू डिसाइड वेदर दिस एक्ट जो बिल लाया गया, इट हैज टर्न इनटू एन एक्ट, आप लोग ओपोज करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग के लिए ऐसा नहीं है कि सेंट्रल में बना दिया तो ये लकीर खींच गया. इट्स नथिंग लाइक दैट. इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स फॉर अस. सो पर्सपेक्टिव अलग अलग होगा, बट व्हेन यू से इन द ऑल ओवर देखा जाए तो ये मतलब इट्स अगेंस्ट द नेचर ऑफ ये पब्लिक का हित पे ना. तो व्हेन आई से ड्रैकोनियन लॉ इज समथिंग, जब एक्ट बनाया जाता है इट्स फॉर वी पीपल, तो उसको कैसा करके मॉनिटर किया जाता है. बेसिकली इट गेट्स मॉनिटर्ड अंडर द जुडिशियरी सिस्टम, यानी कि वहाँ पे कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट्स का लॉ ऑफिसर्स होते हैं, लॉ ऑफिसर्स आपका लॉयर्स होता है. जैसा अजुम सर ने बोला है, द विक्टिम फैमिली दे स्टार्टेड क्राइंग ना बिकॉज दे कुड नॉट अपॉइंट अ लॉयर. और यहाँ का जो ड्रैकोनियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हर चीज जो भी प्रोसीडिंग चलता है इट्स वेरी शेडी इन नेचर. सो मेरे पास आई हैव गॉट 2000 ऑफ पेपर्स. हाँ, हमने आरटीआई मार चुका है. ये अभी रिसेंटली जो 72 आवर्स बंद किया गया था, तो उसका हमने आरटीआई किया. आई हैव गॉट 2000 ऑफ पेपर्स नाउ. उसको हम पढ़ रहे हैं, बट देयर इज नो स्पेसिफिक मेंशन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली द क्राइम दे हैड कमिटेड. और अभी फेमस एक केस था जिसपे एक नाबालिग लड़की है, शी इज हार्डली 15 years old, उसको भी अरेस्ट किया गया था. एंड आई हैव गॉन थ्रू, आई हैव पेरिस्ड हर फाइल. उनका फाइल भी हम पेरिस कर चुका है. यूं ही धड़ाधड़ लिखा जा रहा है. द एसपी, द रोहित राजबीर सर, ही हैज बीन राइटिंग द ऑर्डर्स एंड देन सेम इज विद द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. हम लोग का पोतम सर ने भी यूं ही लिखता चला गया, या शी कम्स अंडर सो एंड सो, शी हैज कमिटेड सो एंड सो, आई हैव फाउंड हर इन सो एंड सो एरिया, उसने ऐसा ऐसा कमिट किया. इतना वेगली करता है एंड दे गेट्स रिपोर्टेड टू द सेक्रेटरी. ये गवर्नमेंट को जाता है एंड देन द गवर्नमेंट उससे कमेंट मांगता है एंड देन दैट्स हाउ द साइकिल गोज. एंड जब ये जुवेनिलिटी का इशू आता है, उनका फैमिली ने बहुत पहले एट द वेरी अरेस्ट होता है उसका अगला दिन ही दे स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स कि मेरा बेटी जुवेनाइल है, शी इज हार्डली 15 years old, आप उसको अरेस्ट मत करिएगा. बट देन दिस लेटर वाज रिटन, इट वाज फॉरवर्डेड टू द सेक्रेटरी. तो इससे पता चलता है ना कि जो जितना भी ड्राफ्टिंग किया गया था सेइंग कि ही और शी कम्स अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटी एंड सो दे हैव कमिटेड, वो सब यही छाप के लिखा गया था. देयर वाज नथिंग स्पेसिफिक मेंशन अबाउट इट एंड वी वांट अकाउंटेबिलिटी. लेकिन अकाउंटेबिलिटी कैसा होगा, बिकॉज दिस इज ड्रैकोनियन. हर चीज शेडी नेचर पे होता है, बंद कपड़ा पे होता है, वी आर नॉट अलाउड, नो वन इज अलाउड. तो किसको हम लोग अकाउंटेबिलिटी मानेंगे? आई हैव रिटन कंप्लेंट लेटर टू द एनएचआरसी पे गया है एंड देन द एनएचआरसी क्या करते हैं, वापस दे फॉरवर्डेड द कंप्लेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, वो भी एसपी को दे देता है एंड देन इट गेट्स डिस्पोज्ड. व्हाट वी कैन डू? आई एज ऐसा नहीं कि आई एम अ वेरी बहुत खतरनाक लॉयर, आई एम नथिंग लाइक दैट. आई हार्डली स्टार्टेड माय करियर एंड इट्स जस्ट कि मेरा आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द ह्यूमन राइट्स एंड आई हैव अ वेरी वंडरफुल सीनियर्स, स्पेशली कानी मैडम एंड सुनील मोह सर. उन लोग से हम इंस्पिरेशन लिया है ना. आई ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्यू ऑफ द यहाँ पे जो अरुणाचल ये लीडर्स है, आई मीन द एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट है,
तो उसमें से I have my respect for Ajum sir as well. Thank you. I will get back to you again. Okay, I'm so sorry. Thank you. So actually, the first session has been very lengthy. So I'm trying to give some equal amount of time to each one of you speaker here. Yes. So now, if you see this APUAPA, it is just a replica of the Unlawful Prevention Act 1967, and it has been amended 6 times by the Indian government. So my question here to all of you is, should APUAPA be repealed or should be amended? Ajum sir. I mean, repeal or revoke. If you ask my personal opinion, of course, it should be revoked. And a law like APUAPA has no place in a democratic country like India. And for that matter, even UAAP, the national level, we know so many activists are inside the bar today. The best example is Umar Khalid, a very young chap, brilliant boy from the JNU. Such a brilliant boy is now behind the bar for the last 2.5 years, just because he had the courage to raise voice against Mr. Narendra Modi. So this is how this law can be misused. And just give me a second, okay? Coming back to this law, I strongly disagree with Dominic that he said that this law is not draconian. हमको लगता है ये लॉ बहुत ड्रैकोनियन है. इस लॉ का अंदर में अगर आप लोग यहाँ जितना बेटा वाला कुछ पढ़ा होने से इसमें एक ये लिखा जाता है कि कोई भी बंदा किसी को अरेस्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल इफ आई एम अरेस्टेड, मेरा जो कैरेक्टर को सर्टिफाई करेगा द कंसर्न पुलिस. अभी जैसे हमको ईटानगर से अरेस्ट किया, ईटानगर पुलिस सर्टिफाई करेगी बेंगिया आजम को रिलीज करना है कि नहीं करना है. दिस गिव्स देम सो मच पावर कि वो डिसाइड करेगा कि हम किस तरह का आदमी है. अगर वो लिखेगा कि इफ द पुलिस राइट्स की नो दिस गाय इज गुड एनफ ही शुड बी रिलीज, तो एडवाइजरी बोर्ड को रिकमेंडेशन भेजेगा. एडवाइजरी बोर्ड यूजुअली टेक डिसीजन बेस्ड ऑन दैट रिकमेंडेशन एंड इसमें सेलेक्टिव रिलीज करता है. लोग मतलब जिसको अच्छा लगता है उसको रिलीज करता है. सो दिस इज गिव्स एब्सोल्यूट पावर टू द सिस्टम. आप अगर आपको किसी को बोर लगे 6 महीने में अंदर रख सकता है. ऐसा बात नहीं, रखा भी 1-2 बंदा जिसको हम जानते हैं 6 महीने अंदर रखे. आपको मालूम है यूरोपियन स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट को उसको 3 मंथ्स APUAPA के अंदर रखा था, फिर अनदर बाद में 9 मंथ्स उसको NSA के अंदर में बुक कर दिया था विजयनगर में जो इंसिडेंट हुआ था. सो दिस लॉ इज तो मतलब एकदम ड्रैकोनियन है. एंड दूसरा बात, आप जब लॉ का इम्पोजिशन का बात करते हैं वी शुड टॉक अबाउट इक्वालिटी आल्सो. आप जब APUAPA को यूज करके यू आर पिकिंग अप दिस एक्टिविस्ट, पिकिंग अप दिस यंग एस्पिरेंट्स who are trying to fight against the corruption. I have a question for Dadavi, even is also BJP leader. I have a question for both the BJP leaders. Tomorrow, if APSU or ANSU calls a ban, will you apply the same law? This is my question to you. आप लोग कल को या APSU ANSU president को उठा के जेल में डालेंगे क्या? We talking about equality. अगर आप equal law को जब आप बोलते हैं कि संविधान का अंदर है तो सबका ऊपर में इक्वली इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए. एंड जो आई थिंक आई इन हियर Dominic sir, what is your take? Should APUAPA be amended or completely repealed from the seat? Repeal मतलब कैंसिल रिवोक करना चाहे कि नहीं? Amended or repealed? I'd like to be specific to the question only. You see, repealing an act or amending an act, it is done in the state assembly and we have our lawmakers. If the public wish, it can be amended. If the public wish, it can be repealed. If the people of Arunachal feels that this is draconian, why not? It can be repealed. Easily it can be repealed. It is not impossible. So my Congress friend has told me, and I heard her saying that it became dangerous from 2019 onwards. I think no amendment has taken place in connection with this APUAPA. It is the same act which was made by this Congress government in 2014. Then I'll not say that this is a bad law, but it is basically to prevent unlawful persons putting another person into fear or putting another person in an insecurity stage, or disrupting this PDS public supply, health services and public movement or business activities in and around the state. तो ये जो लॉ है मैं जो देखता हूँ कि आप लोग
ड्रैकोनियन है, वो है, ये है, बोल रहा है. I was just trying to speak why it is not draconian. I feel that this is not a draconian law. उसका justification भी है ना. We must, if it is to be repealed or amended, it is a different issue. But if it is to stay, just today we are discussing this APUAPA. It doesn't mean that it is going to be repealed tomorrow or amended tomorrow. Repealing and amendment, these two processes, it is not very easy. But I feel that this law may stay for more period of time. अगर ये रहता है, why it is not draconian? मैंने कहा है कि किसी को, अगर एक व्यक्ति को सरकार लगता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगता है, स्टेट सेक्रेटरी लगता है, स्टेट सरकार लगता है, ये दूसरा आदमी के लिए खतरनाक आदमी है. हाँ, ये वुमेन ट्रैफिकिंग का काम करता है, ये ड्रग्स बनाता है, ड्रग्स बेचता है, और ये आदमी का बिजनेस को डिस्ट्रप्शन करता है, लैंड ग्रैबिंग करता है. सरकार का जमीन हो, इंडिविजुअल का जमीन हो, अनलॉफुल वे में, इसमें मजिस्ट्रेट को पावर दिया जाता है कि उसको पकड़ने के लिए, या स्टेट सेक्रेटरी को, वो जो है नॉट मोर देन 5 to 10 days उसको डिटेंशन करके इट इज फॉरवर्ड. But sir, my question here is, sir, आपका सरकार जो बोलता है कि सबका साथ सबका विकास, जनहित वाला सरकार है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ. अभी we want that लोगों का आवाज है कि ये for the people of the state. मैं जो बोल रहा हूँ आपका सर, मैं आपका I'm talking about boon and bane. I don't see any ban over here in this APUAPA. I see boon over here. We should talk about the boon of the people of the state. The peace and public tranquility of the state is the boon of this act. Sir, everything has an advantage and as well as a disadvantage. So this act also has certain disadvantages. So मेरा कहना यह है कि चलो आपको लगता है कि ये एक बन कॉल को या कोई अनलॉफुल एक्टिविटी को कर्टेल करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मिसयूज भी हुआ जा रहा. तो ऐसा कुछ सेक्शंस है जिसके कारण से मिसयूज हो रहा है. तो मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहता हूँ. Okay. Thank you. You see, BJP is running a welfare government in the state. If anything is for the welfare of the people of the state, why not this act can be amended? If necessary, it can be repealed also. Thank you. I think I feel that there is an answer I want to very hear. important. Thank you. I like to request the media fraternity and the students community present over here to create a powerful opinion today whether this act should remain or this act should go. That's very important, I think. Thank you, sir. Now I will move to APCC Vice President once again. तो इस एक्ट को तो आपने लाया, अभी जनता का आवाज सुनकर क्या लगता है, इसको अमेंड करना है या कंप्लीटली रिवोक कर देना चाहिए? देखिए, आपने लाया मतलब हमने तो लेके नहीं आया है. जब बना था तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी. बट यस, आई हैव, अभी आप समय नहीं देते हैं बोलने के लिए. तो द थिंग इज दैट स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि हाउ इट इज बून और बैन, दैट्स ऑन टू द पब्लिक टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो अब ये उसको हटाना है या अमेंडमेंट करना है. कंटिन्यू करते हुए व्हाट आई वांट टू से बाय व्हाइल रिप्रेजेंटिंग ए पार्टी, ठीक है, हमारे कांग्रेस के रिजिम में आया है विद अ क्लियर कट एंड गुड इंटेंशन टू पुट बैन ऑन सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटी दैट वाज अ कंसर्न ऑफ स्टेट दैट टाइम. ठीक है, तो अभी जब आप बैन और बून और या फिर उसको हटाओ या ना हटाओ की बात करते हैं, I would like to ask the public again, including the हमारा moderator, कि मैंने constitutional validity भी बता दिया इस law का, और फिर इसके जितने भी जो repercussion है वो भी बता दिया, और इसका कैसा misuse हुआ है by amending the National Unlawful Activity Prevention Act को, तो वो भी बता दिया. तो ये सारी चीज जानने के बाद और ये भी बताया कि हमारा संविधान कोई कानून बनाता है तो वो जनहित के लिए बनाता है. तो आगे मेरा कहना है, कमिंग टू आवर मॉडरेटर्स पॉइंट, मेरा कहना है, सी देयर शुड बी ए ट्रांसपेरेंसी व्हेन यू इम्प्लीमेंट ए लॉ. जैसे अभी हमारे बेंगिया अजूम ने कहा कि क्या अपसू अंसू बन कॉल करेगा तो आप लोग ये लॉ को इम्प्लीमेंट करोगे, सरकार वाले करोगे या नहीं, क्योंकि कानून सबके लिए इक्वल होना है ना.
और ट्रांसपेरेंट वे में उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर उसको ट्रांसपेरेंट वे में इम्प्लीमेंट नहीं करना है तो पब्लिक आवाज उठाइए, खत्म कर दीजिए, इसको रिवोक कर दीजिए, हम भी साथ रहेंगे। कांग्रेस लाया तो क्या हुआ, गलत है तो गलत है, मिसयूज कर रहा है तो मिसयूज कर रहा है, उसके अगेंस्ट में हम भी आवाज उठाएंगे और उठाते आए, अभी तक उठा रहे, वो तो करना है। और सेकेंडली ये देखिए ना आप, जैसे कि अभी बन कॉल के बारे में कहा आपने, बन कॉल को अनलॉफुल कहा गया। कौन सा कानून है जो कहता है बन कॉल अनलॉफुल है? वकील साहब भी यहाँ बैठा हुआ है। 2008 में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मुंबई में जो बन कॉल हुआ था, हमारे जो अपोजिशन पार्टी वाले और शिवसेना ने किया था, उसको इलीगल, गैर कानूनी करार दिया गया था। लेकिन वॉलंटियर बन कॉल, वॉलंटियर शट डाउन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अभी का जो 72 आवर्स का बन कॉल था, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, वकील है हमारा, सरकार है हमारा, मीडिया वाला है, that was not a forceful ban call, it was the misuse of APUAPA Act 2014, जहां में सरकार ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने बन कॉल करवाया था। बन कॉल का क्या, जैसे कहते हैं ना, मुर्गी डाक दिया करके हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, तो जैसे बन कॉल का कुछ भी सुना तो इंटरनेट बंद कर दो, डिप्लॉय करो आर्मी यहाँ पे, जबरदस्ती दुकान खुलवाओ 6 बजे से, सुबह के 6 बजे से पहले। अगर आप लोग या फिर गवर्नमेंट जो सत्ता में है, वो कानून को सही ढंग से, ट्रांसपेरेंट, एक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वो कानून को इंप्लीमेंट करना नहीं चाहता, जो कि एक राज्य के हित में है, तो हटाओ उसको, क्या फर्क पड़ता है? उसके भी बहुत डायर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये अपुआपा एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि हमारे यहाँ अवैध तरीके से गैर कानूनी एसोसिएशंस इनफिल्टर कर रहा था, हमारे युवा मिसगाइड हो रहे थे। डोमिनिक साहब खुद जानते होंगे, उस समय के हैं वो, इसलिए लेके आया था, ना कि किसी इंडिविजुअल को 2019 में अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट को मॉडिफाई करके इंडिविजुअल को टेररिस्ट करार देके उसको टॉर्चर करे, कस्टडियल डेथ दे, मारे पीटे। तो जनता आपके सामने अभी सवाल है, इज इट बून और बैन, या उसको रिवोक करना है, खत्म करना है, अमेंडमेंट करना है? Okay, thank you. तरफ से तो मैंने कह Thank you, ma'am. धन्यवाद। Now I'll move again to Advocate Mili. As a human rights activist, how do you see this? अगर अमेंड, आपका ओपिनियन तो अमेंड करना है या रिवोक करना ही होगा? अगर अमेंड करना है तो अभी जो प्रेजेंट एक्ट में क्या लूपहोल्स है और कहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, अमेंड जो ना ऐसा होता है, डोमिनिक सर ने मेंशन किया था कि देयर इज अ एनडीपीएस का एक्ट, ये आपको पे बताया गया है। लाइकवाइज आपका इमोरल ट्रैफिकिंग में, द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आपको में ये सब एक्ट्स को मेंशन करता है एंड दे आर डिराइविंग दैट पावर थ्रू दैट एक्ट्स। तो व्हाट इज द नीड ऑफ आपको? जब ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ये स्मगलिंग करने के लिए ऑलरेडी देयर इज अ एनडीपीएस एक्ट, तो उसको ऑलरेडी अच्छे से यूज किया जा रहा है, तो देयर इज नो नीड ऑफ द आपको। सेम इज द इमोरल। और उसके बाद रहा प्रॉपर्टी ग्रैबर्स ना, प्रॉपर्टी ग्रैबर्स, अभी क्लासिक एग्जांपल तो अजम सर ने दिया था कि डीएम सर ने तेजीपुरु इंसाइट कर रहा है प्रॉपर्टी ग्रैब करने के लिए, बट देन रियलिटी पे देखा जाए ना, ये नाहरलगुन और ईटानगर बहुत सारा है जो रिटायर्ड डीसी ऑफिसर्स है, आईएएस ऑफिसर्स है और इंजीनियर्स, बड़ा बड़ा ऑफिसर्स है, उन लोग का इलीगल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है, दे आर द रियल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ग्रैबर्स। उन लोगों को कुछ नहीं कर रहा है, डबल स्टैंडर्ड बेसिकली। एंड व्हेन आई से डबल स्टैंडर्ड, बिकॉज अजूम सर ने बोला है, ही हैज गिवन अ वेरी गुड क्वेश्चन कि वेदर आपसे आंसर बन कॉल डिक्लेयर करता है कि आप इक्वली करेगा कि नहीं करेगा इम्पोज। नाउ आई कैन गिव यू द परफेक्ट एग्जांपल। बैक इन द ईयर 2020, शायद 2021 को था, 2021 को, उसमें अनिया ने बंद कॉल किया था डिक्लेयर, तो उसमें अरेस्ट किया गया था। द डीएम ही शायद उन्होंने डिटेंशन किया था अनिया का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को, बट देन जो छोटा छोटा बच्चे, देयर वर सिक्योरिटी गार्ड्स, हम लोग ने जब बेल किया था, देयर वर सिक्योरिटी गार्ड्स
स्कूल का बच्चे थे, कॉलेज के ड्रॉप आउट थे, दे वर द वन, उन लोगों के ऊपर केस रजिस्टर किया गया। अपना आदमी है पुलिस ऑफिसर से, दे डिड नॉट टेक इट इन लाइट मैनर, क्योंकि उसको तो सक्सेसफुली क्या बोलते प्रिवेंट किया गया था, तो देयर वाज नो नीड फॉर वो छोटा छोटा बच्चे को केस रजिस्टर करने का। दैट वाज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ डबल स्टैंडर्ड, यानी कि आनिया का जो प्रेसिडेंट था, जो बाकी जो था, उन लोगों का अगेंस्ट केस एफआईआर रजिस्टर नहीं किए, सो दे आर स्टिल रोमिंग फ्रीली। लेकिन अभी जो बच्चे थे, देयर वर अराउंड 50 जैसे लड़के थे, उन लोगों का अगेंस्ट अभी भी केस रजिस्टर्ड है एंड दे आर स्टिल ऑन बेल। तो बात वही होता है, डबल स्टैंडर्ड हो जाता है, क्योंकि लॉ इक्वल है, एवरीवन नोज दैट लॉ इज इक्वल, बट देन लॉ में क्या होता है कि थोड़ा कंसेशन अमीर वाले मिनिस्टर वाले को मिलता है कि व्हेन देयर इज अ रेप केस, व्हेन देयर इज अ एनी अदर क्राइम केस, उन लोगों को एडवांस इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि द पुलिस हैज बीन डिप्लॉयड टू अरेस्ट यू, तो उसी समय वो भाग जाता है, या तो एब्सकॉन हो जाता है, या तो सिक्योरिटी कैमरा हटा दिया जाता है। Mili sir, what we should take? Should it be revoked or amended? तो अमेंडमेंट का जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी एनडीपीएस केस वगैरह ऑलरेडी इट्स रिटन इन द APUAPA। तो APUAPA बेसिकली वहीं से पावर डिराइव कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को पावर दे रहा है बेसिकली ना, दे आर नॉट वो कोर्ट से पावर छीन के गवर्नमेंट खुद को ले रहा है ये पावर। तो बेसिकली आउट से कि स्क्रैप कर दो, रिवोक कर दो, दैट वुड बी। Just give me a second. I strongly disagree with what my friend Toko Mina had said regarding कि APUAPA को 2014 में कांग्रेस किस लिए लाया था। She said about कि forming of so many association. I think association form करना भी कोई criminal काम नहीं है, वो भी हम लोग का constitution में ये guaranteed है, मतलब कि you can form association. Of course it's different case कि अरुणाचल में बहुत लोग परेशान होता है, but I think that cannot be justified for implementing APUAPA. And I'm I get this feeling that my friend is very confused because she cannot say against it, or Congress laya, and on the other hand, she cannot defend also because BJP is now implementing it. And BJP wala full support me, that I can understand. Association in terms of this thing, not as a student union or CVS. You misunderstood. Association in terms of, the outfits which were जहाँ तक मैंने मैडम का बात सुना है, she said something like to curtail infiltration and something like this. But मेरे हिसाब से at that time we were in I think Delhi, and there was some political turmoil at present, I think, and it was it was used to sabotage the political movements. That's what I see. And at that time the Congress was in the government. तो मेरा अभी दूसरा सवाल आप सबके लिए है कि कोई भी डेमोक्रेटिक राइट का why band call is a last resort for every pressure group in the state? सरकार क्यों पीसफुल धरना से सुनता नहीं है? और जहां तक APUAPA एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है, why it is used on certain section of people? Why not on these other associations who calls band call every after 2 months? ये partiality क्यों है? Do you see partiality, Ajum sir? And why band call is the last resort? I guess it's more to do with the culture of Arunachal. Actually, Dominic has been APSU presidency. He knows this. He fought that he got APOCA refill. That's an example कि किया भी है, बहुत फाइटिंग भी करना पड़ा। I guess अरुणाचल में एक कल्चर ये बन गया कि until you hit the street, people at the helms of power don't listen. Those sitting at the civil secretary in the AC room, they think that they can run the show, and that people at the ground won't say anything to them. But when people get agitated, when they come to the ground, तब वो लोग का दिमाग का वो बत्ती होता है जो बोलते हैं ना। So I have I spent Arunachal times in 2009 and been almost 13-14 years, and I've covered many agitations, I've covered so many band calls and all. What I've seen is that my personal experience is that the government in the power always seems to be reactive. I mean, they only act. In this case also, in this particular recent, that 72 hours band call also, already these guys were making noises here and there. They one call, ye karega, wo karega. The time actually, they had ample time
आपका सरकार का पास काफी समय था उनको बुला के बात करके दिस आर द थिंग्स दैट यू आर डूइंग, वो लोग ये चीज को नहीं करता है। आई थिंक दे आर सो यूज्ड टू कि इस तरह के लास्ट मोमेंट में रिएक्टिव वाला काम करता है। ये आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजन कि बंद कॉल को लास्ट रिजोर्ट यूज करता है। दैट वाज योर क्वेश्चन राइट? एनी एडिशनल क्वेश्चन हो दिस? आपने कहा अपसू अंशु का ऊपर में क्यों अप्लाई नहीं होता? Oh yeah. Oh, of course, there is a partiality. I mean, like this law was implemented in 2014. After that, also, I think couple of times APSU and ANSU had called one call. Once I saw in a live video, one of the ANSU president was walking the street, or district magistrate was along with him. So who is now depending every now and then APUAPA USPAPA जो करते रहता है, तो that game was roaming around with the ANSU president in the street जब बंद कॉल का दिन में, तो so that gives you a fair idea कि how the law is so impartial in Arunachal, and unless the people, ordinary citizen like us, we raise our voice, I guess this will continue. And I think now that they have opened a floodgate, I would use the word floodgate because by arresting, if I'm not wrong, around 40 people during that last 72 hours, they have opened a floodgate, and now next time people will judge. So it's good for us as an ordinary citizen that they have done something. So next time we will ask them question based on that. The bar has been set here. So next time see whether ANSU and APSU is booked under. And I get this feeling that very soon there might be some burn call in the state. थैंक यू। डोमिनिक सर, क्या लगता है पार्शियलिटी है इम्प्लीमेंटेशन में, और जिस तरह से हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोएक्टिवली इज यूजिंग दिस एक्ट इन अ पर्टिकुलर कमिटी कॉल्ड द पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी, क्या लगता है ये गलत है ना सही? मैं तो ऐसा कहूँगा आपको, आप सभी को, ये बीजेपी सरकार अरुणाचल प्रदेश में पब्लिक वेलफेयर सरकार चल रहा है। सरकार जो भी कदम उठाता है अपने निजी स्वार्थों के लिए नहीं, बल्कि पब्लिक का वेलफेयर के लिए कदम उठाता है। ईटानगर में देखिए, ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट, हर घर में एक प्रेसिडेंट, एक जनरल सेक्रेटरी है। ये एक प्रॉब्लम है। Nobody is without portfolio at Itanar. Each and everyone is a president and a general secretary. एक बहुत बड़ा जोक है ईटानगर में। अगर आप ईटानगर में वो ऊपर चोटी से एक पत्थर फेंकेगा, वो पत्थर गिर के कोई ना कोई प्रेसिडेंट नहीं होने से जनरल सेक्रेटरी का माथा में गिरेगा। सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, एक अचानक से दो आदमी आ गया, एक प्रेसिडेंट बन गए और जनरल सेक्रेटरी बन गया, डे आफ्टर टुमारो बांध कॉल। अरे बांध कॉल इज अ वेरी बिग इश्यू, बहुत बड़ा इश्यू है। आप ईटानगर को बंद करेगा, कितना इकोनॉमिक लॉसेस हो रहा है। हमारा माँ बहन जो सब्जी बेचते हैं, मछली बेचते हैं बाजार में, उसका क्या होगा? हु विल फीड हिम? हैंड टू माउथ जो जीता है, दिन को कमाता है और रात को बना के खाता है, फिर सुबह थोड़ा खा के फिर कमाने के लिए जाता है। अब बंद कॉल करेगा, व्हाट विल हैपन टू देम? 72 आवर्स, 48 आवर्स। अरे ये क्या बात है? व्हाई यू वांट टू रेस्ट्रिक्ट द पीपल फ्रॉम अर्निंग? आप भूखा आदमी को क्यों मरवाना चाहते हो जिंदा जिंदा? पब्लिक वेलफेयर गवर्नमेंट जो है, ये सब चीज को पब्लिक वेलफेयर के लिए, बिजनेस करने के लिए, पीसफुली बिजनेस करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ऑनलाइन नहीं कर देने से वो सरकार का क्या जरूरत है? जरूरत के मुताबिक हमारी स्टेट सरकार सख्त कदम उठाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, पर्टिकुलरली ईटानगर में। और आपने जो इनजस्टिस, जस्टिस, आई एम कमिंग टू द पॉइंट, ये जो बंद कॉल, आई एम वन ऑफ द ग्रैंड मास्टर्स ऑफ बंद कॉल्स इन अरुणाचल प्रदेश, स्पेशली ड्यूरिंग APUAPA पीरियड एज APSU प्रेसिडेंट। लेकिन आज मैं बोलना चाहूंगा कि बंद कॉल इज नॉट अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम एट ऑल। प्रॉब्लम जितने भी बड़े हो या छोटा हो, बट बंद कॉल इज नॉट अ सॉल्यूशन। आज आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ये कॉन्क्लेव प्लेटफॉर्म के माध्यम से
लेट अस ओपाइन, कुछ हम लोग एक उपाय करते हैं, वन कोल का जगह में क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रदर्शन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक ओपिनियन होना चाहिए। द वॉइस ऑफ द पीपल शुड गो टू द गवर्नमेंट, सो दैट द गवर्नमेंट एक्ट फॉर द पीपल। वो होना है, लेकिन वन कॉल इज नॉट अ सोल्यूशन। और आप लोग ने, एडवोकेट साहब ने बोला और आपने भी बोला, हमारा हिटलर के बारे में, जो नेशनल हाईवे में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको डिटेन किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टाइम एंड अगेन has told the media in his briefings कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को उस जमीन को दे चुका है in 2017. It is provided by the state government for the construction of four-way lane at Canada. Within the jurisdiction of the national highway construction area, an extra construction cannot take place for any purposes for that matter. And deputy commissioner, the district magistrate, cannot issue allotment or issue order to conduct any construction activity Sir, my question on the is, national highway. my question so is- ऐसे करके क्या है कि उनको सोशल सर्विस के नाम से बहुत अच्छा ओपिनियन के नहीं साथ सर, मैं आया है। आपको यही पूछ रहा सोशल है। सर्विस करने को इच्छा था, हम भी My support question करता is था, लेकिन regarding the authority partial जो- implementation. या आप सर उसको तो मैं आई एम कमिंग टू द पॉइंट। मैं जो सोचता हूँ, APSU बनकोल, ANSU बनकोल, देखो पब्लिक वेलफेयर सरकार होने के नाते मैं जो देखता हूँ, APSU is such a big organization and ANSU is such a big organization. When there is a mass movement, हजारों का तारक में मूवमेंट होता है, 3,000, 5,000 people at one go, they come out in the street. उसको कैसे इंप्लीमेंट करेगा सरकार? नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है। सरकार can do anything. Sarkar has got so many tools and weapons to suppress even 10,000 people's movement in the street. But इसमें जान माल का नुकसान है, हजारों का मरण होगा इसमें। So keeping in view the public welfare government is at its own convenience to see that no public is harmed. The life and property, especially the life of the people of the state, is very important. So इसलिए ये सब को जानते हुए, देखते हुए, मिनिमम लॉस होने से भी, मिनिमम लॉस हो प्रॉपर्टी का, मिनिमम इंजुरी हो, मिनिमम तकलीफ हो ह्यूमन मूवमेंट को, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को, ये सबको देखते हुए the public welfare government of the state is taking a very lenient view on certain movements which is in massive, so that no loss of life and property is caused much. इसलिए सरकार जो कदम उठाता है पब्लिक का वेलफेयर के लिए उठाता है। उसके बाद आपू आपा के बारे में आपने जो बार बार बोला है, APSU का बनकोल में, ANSU का बनकोल में क्यों अप्लाई नहीं करते? अप्लाई तो करना चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बट कीपिंग इन व्यू अप्लाई कैसे करेगा? The intensity of applying this law at a particular period of time, that is very important to save the people's life in particular. इसलिए जो मैं देखता हूँ APSU ANSU बनकोल में आपको आपा अप्लाई होना चाहिए। अगर if it's applied to a particular group or individual, it should be applied to all sorts of बनकोल in the state also. ठीक है सर, बट अनफॉर्चुनेटली पार्शियलिटी तो जरूर दिखाई देता है। आपने बोला हर किसी को अप्लाई करना है, लेकिन ये तो हो नहीं रहा। Even in past 7 years, I have not seen this, and this APUAPA is only implemented on this particular group of people who are raising voice against the APPSC fiasco. I also have some questions related to APPSC. Should I reply on that? No, sir. Since, I will move to AP. I will move me as government representative, I should be allowed to reply also on that. Sir. तो मैं थोड़ा सा मैं रिप्लाई करता हूँ इसमें। देखिए, ये जो APPSC fiasco के लिए, ये जो एक कमिटी है, led by very good and active boys, I also appreciate their energy, talent and ability to organize people. मैं उन सभी को appreciate कर रहा हूँ। लेकिन as per the demand, जैसे FIR लॉज हो, वैसे हमारा सरकार के पुलिस फोर्स, सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन, जब के उत्तर कर रहा है मैदान में, कितने लोगों को एक्स्ट्राडम अरेस्ट किया, अराउंड 40-45 प्लस कंटिन्यूसली अरेस्ट करके जा रहा था। अचानक से फिर ये ग्रुप नहीं, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का
काम काज कुछ नहीं है, डाउट लगता है, सस्पिशियस लगता है, तो बात भी हो सकता है, चीटिंगबाजी हो सकता है, हमको सीबीआई चाहिए। तुरंत सीएम साहब रेकमेंड कर सीबीआई को ला दिया, सीबीआई इज वर्किंग, और सीबीआई को उधर जाकर के कोई डायरेक्शन करने के लिए भी कोशिश किया। नाउ देखो द क्वेश्चन इज, आप सबको जानना बहुत जरूरी है, when a matter is referred to CBI, when the CBI takes over the investigation of the case, of a particular case, the state police and the state government has got a very limited role to interfere in the matter of the administration of CBI. उसको जानना बहुत जरूरी है, एक्स्ट्रा डिमांड करके फायदा नहीं है, ये सरकार का हाथ में नहीं है, स्टेट पुलिस का हाथ में नहीं है। स्टेट पुलिस का काम होता है वो पालना आदमी का घर कहाँ में है, वो पालना आदमी कौन है, सिर्फ दिखाना है, एक्शन सीबीआई का है। स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो कैनॉट एक्ट मच। इसमें सीबीआई का प्रोसेस में अगर कोई सरकार इंक्लूडिंग सीएम, पुलिस, डीजीपी भी ज्यादा इंटरफेयर करेगा, सीएम का भी अरेस्ट हो सकता है। सीबीआई कैन अरेस्ट इवन सीएम, डीजीपी ऑफ द स्टेट पुलिस। ऐसे प्रोसेस है। व्हेन इट इज अंडर सीबीआई consideration, when it is investigated by the CBI, I think knowing fully the limit of government, the limit of state government, demanding more and more and picking up more issues and going for more ban calls, I think this is that the reason to apply APUAPA, because they are demanding more? I think this is not the I think genuine thing that has to be done, but the issue is very, very genuine. So therefore, I think the government feels that sufficient action has been already taken, and it is under process as per the demand of this our organization led by Active Voice. So I feel that the process of the CBI, which is under process, should be, I think, allowed to do in a very peaceful way. And the government, the state police, as they are already extending their full cooperation, the organization concerned for this APPAC fiasco also should extend cooperation to CBI investigation. Thank you, sir. I would like to sum up the program in next 20 to 25 minutes. Then we will have some public questions as well. So I request all the speakers to be brief. The same question applies both to the Congress representative and the human rights member, the activist here. How do you justify the utilization of APUAPA by our district administration? Briefly. ब्रीफ। अरुणाचल में एक जगह पेड़ लगाता है तो वो जमीन आपका हो जाता है कि नहीं? बहुतों ने ऐसा लैंड ग्रेविंग किया, लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बस ओनली फॉर पैन अरुणाचल जॉइंट स्ट्रिंग कमेटी के लिए एक स्पेशल ऑर्डर निकाला। दे आर डूइंग सोशल सर्विस विद इल इंटेंशन ऑफ ग्रेविंग लैंड। कल से आप कभी भी पेड़ मत लगाना, रिवर क्लीन मत करना, स्कूल साफ मत करना, नहीं तो आपका क्या है, इल इंटेंशन है लैंड ग्रैबिंग का, है कि नहीं? तो ये बात आप समझ लीजिए। तो इसमें मिसयूज किया कि नहीं किया? मिसयूज किया कि नहीं किया? हाँ, तो सीधा सा बात है, मिसयूज किया है। और सेकेंडली, हमारे ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ एक सेकेंड पॉइंट में कुछ कहा था, किस चीज पे था? बोलिए। हाँ, their demands are increasing. नहीं, वो खुद बोल गया। ऐसा भी क्या कथन जारी करना है, ऐसे स्टेटमेंट जारी नहीं करना चाहिए। उनका डिमांड जब से वो हड़ताल पे थे, धरना पे थे, एसआईसी से लेके सीबीआई से लेके मिसयूज ऑफ APUAPA 2014 बाय गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक, अभी तक एक ही डिमांड है। There are anomalies in the APCS एग्जाम जिसको नल एंड वॉइड कंसीडर करना चाहिए। तो वो हुआ क्यों नहीं? अब बेचारे ऑप्शन तो एक्सप्लोर करेंगे ना। अब ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे, उसके पास तो कोई इतना बड़ा लीगल ये सप्लीमेंट तो है ही नहीं, सपोर्ट तो है ही नहीं। बच्चे हैं, दे आर फाइटिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ अदर चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स, अदर एस्पायरेंट्स। वो उसके पास तो कोई माई बाप नहीं है। इस प्रोसेस में किसी को अरेस्ट किया जाता है सेलेक्टिवली, किसी को
नहीं किया जाता है. Some dies, some commit suicide. How is this government doing justice to the aspirant? ये पहला क्वेश्चन है. तो ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे बच्चे. विश्वास थोड़ा जा रहा है. They do not have trust on the government and their representatives. तो वो तो इधर उधर करेंगे ही. तो हमारा माई बाप कौन है? द गवर्नमेंट. वो अनस्टेबल तो बच्चे भी अनस्टेबल. हमारे फ्यूचर का बात है. जो बन गया था बन गया, लेकिन जो आगे बनना है उनका क्या? तो दिस इज वेरी सिलेक्टिव. इन अ वे सिलेक्टिव है ना. किसी को मौत मिल रहा है, किसी को फ्रीडम मिल रहा है, कोई जेल के अंदर है, किसी के ऊपर 144 लगा के रखा है, किसी का प्रॉपर्टी सीज किया गया है, और जिसका करना चाहिए तो वो नहीं कर, उनका नहीं हो रहा. तो अब सीबीआई हेड ऑफ द स्टेट को अरेस्ट करे या किसी मुलाजिम को निचली स्तर पे है करे, जस्टिस तो चाहिए ना. 1 साल होने को आया, मिल क्यों नहीं रहा? जिसने कंप्लेन किया, जिसने अपनी मजबूरी जताई, जिसने भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज उठाया, वो दर दर क्यों भाग रहा है? Why they are made to hide in the jungle? Why they are detained in the name of क्या है? Prevention detention to avoid internal disturbance. अब करप्शन के अगेंस्ट लड़ना कौन सा इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया? क्या ये मिसयूज नहीं है APUAPA 214 का? किस हिसाब से लोग यहां जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये मिसयूज नहीं है? अभी पब्लिक के ऊपर, आप श्रोताओं के ऊपर है. ध्यान दीजिए. Thank you, madam. You want to say something on this? The impartial implementation of APUAPA and how to justify the district administration action recently that has been taken place? वही आपको जैसा बताया था, it is impartial, no? क्योंकि बहुत सारा चीज पे अप्लाई किया जा सकता है. Like I said, because सचिपुरो को डिक्लेयर किया गया unlawful through this act. ये बोल के कि he is inciting people to grab the government property. तो I've given the example कि twin capital पे कितना सारा illegal ऐसा है. And then ठीक है, I think I got your point. So let me come back to our theme, digital media as a catalyst for social change, the role of media in transforming the society. I would like to hear briefly from all of you that how we in media can play a role, in bringing changes in the society, good changes in the society. I would like to start with Arunji. Actually, before coming to your question, I just want to add one thing about जो अरुणाचल में, मतलब just give me 1 minute, जो अरुणाचल में बहुत सारे एसोसिएशंस वगैरह बनने के कारण कि आपने जैसे आज डोमिनिक में बोला कि किसी का घर में फेंकेगा तो कोई प्रेसिडेंट जी निकलेगा. This is a chronic problem, I understand, but also we need to understand the reason behind why it is happening, because system has failed our people actually. तो जब सिस्टम फेल करता है तो लोग क्या करते हैं? You have to assemble a group and fight for the justice. अभी एडमा भी तो एक एसोसिएशन ही है ना, तो आप भी क्या वो बोलेगा? तो I mean, and कभी-कभी क्या होता है कि बंद कॉलर्स को these politicians they invite them, 4-5 लोग मिलके बंद कॉल करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, पैसा देते हैं, उनको गायब हो जाता है. ये भी एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है. तो I mean, just I'm adding to what he was saying. Coming to your question of what role media can a positive change in the society. See, my experience in the state media here is that it's very difficult to do a serious journalism in Arunachal. Honestly, this is not a place for those who want to do serious journalism. हम तो अभी भी बोलेगा. Still, I'll say, among the young friends, if you're very serious about journalism, I think you should better go outside and learn from there. Because यहाँ पर serious journalism करने के लिए आप जब आते तो you end up messing around with so many people. And यहाँ का और एक problem क्या है कि like everybody literally knows each other. Everybody is related कहीं ना कहीं. तो इसको करने से वो दुख हो जाता है, इसको रिपोर्ट करने से वो दुखी हो जाता है. मतलब you cannot do anything. मतलब एक 3 लाइन मेरा तो ऐसा करके literally I have lost touch with my family members, friends also. मतलब क्योंकि all of them think that I'm their enemy actually. अलग बात है, I'm not their enemy. तो इस तरह का हो जाता है. तो media can play what kind of role media can play? Last 1 year में देख लो example this APPCPS को में
I guess the amount of reporting that media has done, especially everyone. I mean, I won't cite one individual, all of has done so much of in-depth reporting that it has forced those in the systems to act also. I mean, if this PAJSC member also, if media were not with them, I don't think they could have done the amount of work that they have done. Media has been very supportive of them in the sense that they were doing. We had this feeling that yellow system against the corrupt system against Miller. So this is just an example, a positive role media can play. And Baki media can be very negative also at times, in the sense that we have to be very responsible. Aaj ka, especially digital ka zamana mein, especially this is my sincere request to my digital friends that, you know what, in this era of breaking news, sometimes we tend to commit a mistake which can have a serious repercussion, especially in a state like Arunachal, which is a very sensitive state, a tribal state. यहाँ पर आपका एक छोटा wrong reporting का वजह से दो tribe का बीच में communal fight हो सकता है, कहीं दो clan के बीच में भी हो सकता है. So you ought to be very, very responsible. So Dominic sir, do you have something to say on our role, how we can play an important role in bringing good changes in the society? Briefly, sir. Then after that, if anyone of you want to ask questions, you can ask the question. Thank you. I think there is and there cannot be better role than the role being played by media in any society. Of course, in the context of Arunachal Pradesh also. Media was very less in, my friend Taro Chatung's wife is here, children is also there. He was one of the main pioneers. He used to be my friend and we used to sit together, have tea together and discuss about films and media and उनके कैसा लगा सवाल इतना हर जगह में जाके पूछता है ऐसे बारे में ऐसा media is very effective. In fact, अभी जो है कि in a present context all issues are being fought on media. कोई ग्राउंड में जाके एक दूसरा पुराना जमाना जैसा तो फाइटिंग तो करता नहीं है, but people fight in the media. हाँ, even elections are being fought in the media. Media has a very important role to mold the opinion of the people, even getting a candidate elected. Even in the winning and losing during election period, the role of media is very important. Especially, I don't speak about this. I'm a candidate who had contested last time in the students' union also. Whenever we talk about, I think about elections only, but majorly about social issues, social upliftment of the downtrodden in the society. I think, and all the required things that the people are supposed to get at a ground level, especially in the context of development, equal development of the people of the state. The role of media is very important. जहाँ disparity है, जहाँ disrespect है, जहाँ dishonor है, जहाँ inequality है, ये सब को फोकस करना, मीडिया में लेके आना, सरकार को जानकारी देना, पब्लिक को जानकारी देना, हम लोग जैसे आदमी को जानकारी देना, opinion mold करना. I think the role of media is very, very important. And in fact, ये जो APPSC fiasco में भी, I would like to congratulate all of you. आप लोग का role बहुत ही important रहा. मैं तो ये अभी भी आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि APPSC जो इसमें fiasco में जितने भी जो सरकार का एक्शन है आप लोग भी बताते हैं और स्टेट यूनिट को डिसबैंड करो, SIC को CBI लाया, उसका बाद में एक कमीशन बनाता है, कमीशन का चेयरमैन को अपोज किया, मेंबर्स को अपोज किया, फिर उसको सरकार इमीडिएटली एक्शन लेके उनको फिर सरकार का ऑर्डर को रिवोक किया. उसका बाद ये आपने जो बोला है कि APPSC fiasco मतलब जो इसमें इश्यू है इसमें हम ज़्यादा गहरा नहीं जाएंगे. जो सच्चा है आप जो फोकस कर रहे हैं आप जो APPSC fiasco को भी अच्छा से जानकारी होने के लिए जो जितना सरकार स्टेप ले रहा है, क्योंकि इसमें APPSC fiasco को कंक्लूजन में लाने के लिए मतलब सभी का जो सेटिस्फेक्शन में एक कंक्लूजन में लाने के लिए आई थिंक मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और मीडिया इज मोल्डिंग द पावरफुल ओपिनियन इन दिस रिगार्ड आल्सो. जो दिस इज APPSC इशू एंड अदर बिग इश्यूज, सोशल इश्यूज जो सोशल रिलेटेड, पब्लिक रिलेटेड इशू है, डेवलपमेंट रिलेटेड इशू है. आई थिंक करेक्ट पर्सपेक्टिव जो है मीडिया हम लोग को जो इंफॉर्मेशन देता है, इवन इफ आई एम इन अ गवर्नमेंट
and even if my government is in the power, but बहुत कुछ हम नहीं जानते हैं. जो हम नहीं जानते फेसबुक को खोलने से हमारा मीडिया फ्रेंड्स वो लोग हमें बताते हैं. These are what is happening. These are the things where the government has to take corrective steps for the welfare of the state. So I think the media, role of the media is very, very important, and I would like to congratulate the media fraternity of the state for playing a very positive role. And in fact, today's conclave is also especially about money culture. I've heard, I was there since morning, and this APUAPA के बारे में आपने जो उतना बड़ा conclave organize किया है, I think you deserve all my respect, honor, and I extend from the core of my heart and to my party also, I give you a very big congratulations for today's wonderful event. Thank you. I had a question related to money culture election for both of you, but as I'm taking too much, this session is also getting lengthy. I want to, before I, go for Q&A session, Madam, what suggestion you would like to give to a young budding media friends? आज के इस निर्वाचिका सभा में जो आपका थीम है डिजिटल मीडिया एक समाज परिवर्तन या बदलाव के लिए कैसा एक जरिया बन सकता है कि नहीं, तो इसमें मैं तो ये कहती हूँ चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मीडिया तो मीडिया है एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का. तो मैं ये कहती हूँ कि स्तंभ मत बन के खड़े रहो, स्तंभ बनो तो इमारत की बनो, खंडहर की नहीं. खंडहर का इमारत का भी वजूद होता है, लेकिन उतना वजूद होता है कि उस पे हर कोई अपना नाम लिख के चला जाता है कि नहीं, वो किसी और का होता है. तो इमारत पे आप उस इमारत का स्तंभ बनो जिसमें लोकतंत्र, आपका डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वलिटी बना रहे हमेशा. और वही चीज आपके थ्रू हम अरुणाचल में, इस राज्य में, लोगों के मन में वो परिवर्तन देखें. And you all have to understand there is a power in you. You have to, once you realize that power, you all become limitless and the become guardian of that four thing that is democracy, liberty, freedom and equality. Thank you. Thank you. Mili, any advices for our young media friends over here? How we can play a very important role in bringing a positive change in the society? Yes, I would like to say कि आप लोगों का जो काम है, जो प्रोफेशन है, हैट्स ऑफ, क्योंकि आप लोग का वीडियो भी देखा अपनी डॉक्यूमेंट्रीज ना, एंड सीरियसली हमारे देश में जितना भी इश्यूज होते हैं, दोस आर डिसाइडेड बाय द मीडिया पीपल ना. मीडिया पीपल चाहो तो जो दिखाना चाहते दिखा सकते हैं. यू कैन इवन टॉक ऑफ द गवर्नमेंट जैसा बताया गया. तो मेरा तरफ से तो वही बोलेगा कि रिमेंबर कि कुछ इश्यूज आते हैं बट इट डज नॉट अफेक्ट यू, बट ये गलत है, बहुत गलत है एट एवरी लेवल. लेकिन आप खामोश रहेगा तो सोचना मत कि वो एक दिन आपको ऊपर भी आएगा. जस्ट लाइक दे केम फॉर द स्टूडेंट्स, दे सेड द स्टूडेंट्स वर नक्सल्स, अर्बन नक्सल्स ऐसा बोल के उससे हम लोग ने साथ नहीं दिए. तो स्टूडेंट जो थे उन लोगों को बहुत सहना पड़ा है. एंड देन दे केम फॉर द फार्मर्स ने भी इशू उठाया. वी डिड नॉट गिव इंपॉर्टेंस क्योंकि इट वाजंट अफेक्टिंग अस. तो लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत था, बट वी नेवर गिव इंपॉर्टेंस. तो ऐसा ऐसा के देयर केम द डॉक्टर्स को भी ऐसा किया है. और जब फार्मर्स का इशू हो रहा था, देयर वर रेसलर्स लोग था, सेलिब्रिटीज था, दे वर क्लिकिंग फोटोज विद द मिनिस्टर्स एंड ऑल कि इश्यूज पे बात नहीं करके, बट देन दे वर टेकिंग पिक्चर्स. लेटर जब एलिगेशंस है रेसलर्स का ये फ्रेटर्निटी पे, उस पे भी हम लोग ने आवाज नहीं उठाया. तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता सबको जो एक होता है बिगोट्री होता है, फैसिस्ट होता है, डिक्टेटरशिप जो एलिमेंट्स होता है ना, उसको हम लोग को आवाज उठाना है. नो मैटर व्हाट एवर द पार्टीज ना, अगर देख रहे कि उस पर बहुत गलत है तो हम लोग को आवाज उठाना चाहिए. तो आप लोग का मीडिया फ्रेटर्निटी जो है वो बहुत बहुत बड़ा रोल खेलता है. तो ऑल माय एडवाइस इज कि आप लोग ऑलरेडी यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड जॉब, तो वैसे ही करते रहना. थैंक यू सो मच. Any questions? No questions? बहुत ज़्यादा. I was the BJP spokesperson, but after seeing how Congress spokesperson is speaking, I want to ask her first. I think they are responsible, opposition has been responsible for all the bad things that is happening in Arunachal Pradesh. Sometimes I feel like that. Because
स्तंभ बनो, पिलर बनो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम आज तक इसके कांग्रेस I haven't heard Congress president or Congress besides I hear her speaking all the time, लेकिन कांग्रेस का प्रेसिडेंट से मैंने एक बार भी नहीं, तो किस तरह का ऑपोजिशन आप है? How can you define yourself as opposition? And I was just hearing, I was expecting fireworks today. I just heard whimpers. So are you being gagged? That's my question to you, number one. And number two, how can you justify yourself as an opposition? You cannot say anything, you cannot do anything. Your president doesn't come to the press club, doesn't even say this is wrong. What is happening? Because of opposition like you, we have student organization which is forced to leave their work and come and become opposition. So please, I would like to ask you first, and my second question will be the BJP spokesperson. He says, APUAPA is a bane. I nearly died here after hearing that. हम तो मरने वाला था सुन के, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा सुन के, इसलिए I would register my concern, because सिर्फ दो चीज को ही बोलेगा आपके APUAPA को लेके. एक ऐसा कानून बनता है जहां पे आपको अरेस्ट होने से you don't get legal representative. If it is not draconian, what is the draconian? I don't understand. Might be I don't learn. I haven't understood the word draconian. Number one. Number two, आप 42 आदमी को आपका एडमिनिस्ट्रेशन अरेस्ट कर रहा है. इससे पहले भी बहुत बार हुआ, ऐसा हमने भी नहीं सुना, हमने भी नहीं देखा. आप बोलते हैं कि this guy is absconding and using this particular, I would again use the term draconian. You like to take away his property. Are you, just because this person cannot talk back, this person doesn't have following, is it because of that the government is so bold in taking this step? Because see, I don't support ban culture. I represent Arunachal Chamber of Commerce and Industry. We are the one we get affected the most. There are 20,000 GST holder in entire Arunachal Pradesh and 40,000. They are the real people who are working. They are the one who get affected. लेकिन मेरा ये क्वेश्चन आप दोनों से, आप पहले बताइए हमारा इमारत, हमारा स्तंभ, उसके बाद हम स्पोक्स पर्सन से सुनना चाहते हैं. थैंक यू. You have two questions. Why the opposition INC is not so responsive and active? Second is regarding APUAPA, right? फिर भी चलो बता देते हैं. I will supplement him. I have lots of information and knowledge about it, but बोलने का मौका नहीं मिला. Regarding देखिए INC जो है, that has been बहुत ही एक्टिव पार्टी है और हमेशा से आवाज उठाते आए हुए हैं. आप देखेंगे कि 365 डेज होता है एक साल में, कम से कम 400 तो प्रोटेस्ट रैली करता ही है. वो अलग बात है कि हमारे यहाँ जो है ना रूलिंग फोबिया है, तो हर कोई चला जाता है जहाँ जहाँ रूलिंग होता है, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तो वो वहाँ चला जाता है. पार्टिसिपेशन लेवल कम होता है, हेड काउंटिंग, लेकिन 1 या 2 से तो हमेशा प्रोटेस्ट, हमेशा धरना, हमेशा रूलिंग के जो गलत जो विधि है उनके विरुद्ध आवाज तो उठता ही है. फॉर एग्जांपल APUAPA कांग्रेस के रिजिम में लाया था. प्रेसिडेंट ने उठाया नहीं उठाया, हम तो सुना नहीं. कांग्रेस ने लेके आया, हमने उसका मिसयूज के अगेंस्ट आवाज उठाया. हमारा ये जो सिविल सर्विस एग्जाम के अगेंस्ट में हुआ, टीचर्स के इलीगल अपॉइंटमेंट में किया, बहुत सारे ऐसे है इश्यूज, उस पर आवाज उठाया. लेकिन रिगार्डिंग जो प्रेसिडेंट के इन्वॉल्वमेंट, पार्टी प्रेसिडेंट के इन्वॉल्वमेंट, पार्टी प्रेसिडेंट से कांग्रेस नहीं बनता है. वी हैव डिफरेंट पार्टी प्रोटोकॉल एंड डेजिग्नेशन. अगर मैं स्पोक्स पर्सन होती, ये मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि अपने पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए मैं उन सारे मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाऊं जो जनहित में नहीं है. और पार्टी प्रेसिडेंट का रोल, उसका कर्तव्य, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जहां सीरियस सिचुएशन हो वहां आके इंटरवीन करे. जैसे राहुल गांधी मणिपुर गए थे, वैसे नाबम तुकी जी ने अपने सगाली न्यूज करके एक चैनल है, ठीक है, जहां जो भी न्यूज, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया या प्रिंट मीडिया अवेलेबल होता है, उसी के थ्रू एड्रेस किया था. ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के मैटर में भी APUAPA, मिसयूज ऑफ APUAPA एक्ट
को भी, लिंक अभी मेरे पास नहीं है, ढूंढ के मैं दे दूंगी। और रहा बात प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठने का, जहां इस देश में, इस राज्य में एक ही जन का मन की बात चलता है जोरों शोरों से, बहुत सारा प्रमोशन से, वहां हम चाहे 2-3 आदमी जितना भी जो कर ले, बोल ले, वो कभी भी दिखाई नहीं देता है। ये आप लोगों को भी पता है। थैंक यू। Let me ask a rejoinder, because we have been following politics in India for quite long. I have heard Mallikarjun Kharge speaking. I have heard Sonia Gandhi speaking. I have heard Rahul Gandhi speaking on matters which is very important. But why? How come the same thing is not being applied in Arunachal Pradesh? We have been hearing you, but we haven't heard from the top. Why it is so? Are you being gagged? We want to know today. Are you not allowed to speak because you are speaking like a cat? You are a tigress. I don't hear that today. So are there things that you cannot say? So these are the tragedy of Arunachal Pradesh, I guess. We'll live with them. Thank you. Are you going to respond it or will keep at it as it is? Rahul Gandhi is neither a president nor a spokesperson of party, but he's a simple party worker. He was a former president, but abhi he's a party worker. As a party worker, it is his duty. The way I share my duty to Congress party, he's also sharing his duty. वो राहुल गांधी है, हम नावम तुकी, हम मीना टोको है, डिफरेंसेस नहीं है। वी आर फैमिली मेंबर, सो प्रेसिडेंट का इन्वॉल्वमेंट इतना आपने देखा भी नहीं होगा सेंट्रल में। हाँ, सोनिया गांधी ने जरूर मणिपुर इशू के बारे में बोला है, मणिपुर इशू के बारे में बोला है सोनिया गांधी जी ने एज ए पार्टी प्रेसिडेंट। अभी बोलना होगा तो उस पे हमने बहुत सारे चर्चा किए हैं। तो आप लोग फॉलो कीजिए इसको, तब जाके थोड़ा सा जी के भी आगे बढ़ेगा। Deviating from the topic that we have, so I think you have a question. How to respond? No, I just said कि when you were saying APUAPA is a ban, I nearly died here. तो उसके बाद वही हम दो चीज ही पूछे, आपको क्यों ये बैन लगता है? किसी को अरेस्ट हो जाता है, दो ही चीज पूछेंगे हम, वो उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव तक नहीं मिलता। यू आर जस्ट नरेटिंग द स्टोरी हाउ दैट वुमन ब्रोक डाउन, रो रहा है कि एडवोकेट तक नहीं मिल रहा। क्यों? ये अच्छा ऐसा लॉ होता है कि यू कैन नॉट इवन टेक रिकोर्स टू योर ओन लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इज दैट अ बैन और इज दैट अ बून? आई डोंट नो। नंबर 2, अगर आप जानते हैं कि सेम क्वेश्चन आई विल रिपीट, AAPSU ANSU होता तो नहीं करता होता, AAPSU ANSU नहीं है बोल के इसका फॉलोइंग पीछे में नहीं है बोल के उसका प्रॉपर्टी को स्नैच कर रहा है। इज दैट राइट? इज दिस काइंड ऑफ लॉ, इफ इट इज नॉट ड्रैकोनियन, इफ AFSPA is not draconian, if it is not draconian, then I think all of us has to go back to the drawing board and read, understand the law and come back again. Thank you, spokesperson. मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन में देना चाहूँगा। आई विल नॉट मच रिप्लाई टू द क्वेश्चन, लेकिन आई विल स्पीक अबाउट द एक्ट। इसमें आपको अच्छा से एक्ट को देखना चाहिए। लेट मी ऑल्सो एक्सप्रेस दिस APUAPA, since I think the public should know what you have questioned. As a student of law, let me express from legal point of view. Actually, ये एक्ट जो है ना, हम ही satisfied नहीं है actually personally. I am also not satisfied. Why I am not satisfied? Because ये कौन सा डायरेक्शन है? CRPC को मैंने पढ़ा, पास किया, IPC पास किया, एविडेंस ऑफ लॉ, ऑल लॉ जो जितना 3 साल में मैंने लॉ किया, आई पास ऑल द लॉ सब्जेक्ट्स। लेकिन जो APUAPA जो जब बोलने से, ऐसे कि आपने जो बोला है कि लीगल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार को छीना गया, इसमें ऐसे आई वाज, लेकिन हमारा जो मॉडरेटर हमको स्टॉप किया ऊपर जाने में, इसलिए हम बीच में रुक गया था। थोड़ा सा मैं ऊपर जाके मैं शेयर करता अपना ओपिनियन को। ये जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और रैंक ऑफ स्टेट सेक्रेटरी, ये दोनों जो है जिसको डेंजरस लगता है, हाँ, फियर साइकोसिस क्रिएट कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कर रहा है, आदमी का बिजनेस को बंद कर रहा है, किसी का प्रॉपर्टी ग्रैब कर रहा है, ऐसे आदमी को डाउट करने से वो डिटेंशन करता है। हार्डली 5 to 10 days। उसको डिटेंशन का कारण बताना है आपको, जिसको डिटेन किया उसका पहचान आप सरकार को फॉरवर्ड करना है। सरकार इमीडिएटली वहाँ में क्या है कि इसमें डिस्कस करना भी जरूरी है और जानना भी जरूरी है। सरकार एडवाइजरी बोर्ड को फॉरवर्ड करता है, एडवाइजरी बोर्ड स्टडी करके एक, इट इज लेड बाय रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड विद द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो इसमें सरकार 2 मेंबर मतलब जो अपॉइंट करता है, ये 3 मेंबर अंडर द लीडरशिप ऑफ द चेयरमैन
इसमें डिसाइड करता है कि ये जो डिटेंशन किया, वेदर इट इज लीगल और इलीगल, whether there is sufficient evidence of law or not for detention. अगर sufficient है, सरकार को लोग recommend कर देता है, sufficient नहीं है तो automatically उसको release किया जाता है. Sufficient होने से फिर सरकार को detention सही है उनके लिखे फिर वापस दे देता है. और according to the situation detention period को सरकार डिसाइड करके extend करता है. लेकिन इसमें एक provision है, उसको देखना है. Any detainee who is a victim of this detention can make a representation to the government. There is a provision. Clear cut लिखा हुआ है इसमें. वो representation के चलते अगर detention continue होने से भी as per directives of the advisory board, तो the government has got the power to release, cancel the detention and release the detainee at any period of time. सरकार कर सकता है. तो इसमें ऐसे ही कि मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड भी सिर्फ 6 मंथ्स का है, ये सभी को पता है. और उसके पश्चात इसमें जेल भेजने का कोई प्रोविजन नहीं. डेटेनी को जेल नहीं भेज सकता है, ये कोई लॉ है क्या? कुछ तो उतना महीना जेल में रखा है, लिखना चाहिए, नहीं लिखा है तो इसमें. हाँ, उसका पश्चात इसमें फाइन नहीं है. हाँ, इसमें आपने कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है. इसमें एक प्रोविजन है. When detainee enters bond with the government, the appropriate authority, इस bond में लिखा हुआ होता है कि at any period of time, at a call of the authority, the detainee will surrender before the government or the appropriate authority. अगर surrender नहीं करता है तब इसमें extension of detention period 2 साल भी हो सकता है, 50,000 का फाइन हो सकता है. ऐसे है. अगर detainee cooperate करेगा, this is not a law at all. सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने में कुछ समय के लिए उसको रुकावट पैदा करना सरकार का काम है. आई डोंट थिंक दिस इज ड्रैकोनियन. एब्सोल्युटली इट इज नॉट ड्रैकोनियन एट ऑल. आई हैव टॉक्ड अबाउट अपर्स पावर्स, आई हैव टॉक्ड अबाउट APUAPA also. These are draconian laws. Thank you. Thank you. But one person, one question. Okay. So if anyone has एक क्वेश्चन पूछना है एक ही आदमी को, नो डबल ट्रिपल क्वेश्चन. तो टॉपिक का आधार पे ही क्वेश्चन पूछेगा. Is you were mentioning that in 1967 UAPA bill was implemented in India to cover illegal or unlawful activities. Now the same law has been used to detain so many people. This with me. In 2007, a cartoonist was booked under this particular. Make the question brief. आप पूछना क्या चाहते हैं वो चीज डायरेक्ट पूछिए. My question is that since this law has been brought by your government, means the part when your party was in the government, and this the particular law which we are discussing in context of Arunachal, that is APUAPA, it has been also brought by your party's government when it was in power. Don't you think your party and you especially has a moral obligation to recognize that yes, you have done a mistake instead of running away from the question and doing all sorts of bottom? Second thing, I would like to make clear, rest of my objection over your use of the word implementation of the thing you have said. Ma'am, आप जो शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, the same form of the same vocabulary is used by the other people also. Urban Naxals कहते हैं हम लोगों को कर देते हैं. पुलिस व्यक्ति में when he was arrested, उनको कितने लोगों ने urban Naxal कहा था. Don't you think these both issues on this, you have a moral obligation to say sorry and recognize your mistake? I think it's clear now. I think she got the question. मेरे रेस्पेक्टेड आदरणीय भाईजान, आपने जो सवाल किया है, I have understood. First one is that moral obligation. Second one is apologizing. देखिए, running from the law which was brought by the Congress party during their regime, मैंने कहा हर चीज संविधान से निकलता है और संविधान से जो निकलता है वो जनहित में होता है. अगर आप पैसा भी ज्यादा यूज करो तो वो एक
क्या बन जाता है? कर्स, बैन, है कि नहीं? और अगर आप पावर भी यूज करो या फिर किसी कानून को भी मैनिपुलेट करके ओवर यूज करो, वो एक कर्स बन जाता है। ठीक है, आप जैसे जैसे एग्जाम्पल लिया कार्टूनिस्ट का, 2017 से पहले जिनको जिनको प्रिवेंशन डिटेंशन के अंदर रखा, भारतीय इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रही हूँ, नॉट ओनली इन अरुणाचल, अरुणाचल में तब तक आया नहीं था, सारे को एक्विटेड किया गया। 2017 से पहले जितने भी थे सबको एक्विटेड किया गया। आप उठा के देखिए डेटा, 2017 के बाद कितने केसेस हैं? किसी को छुटकारा मिला जेल से, कई जुडिशियल कस्टडियल डेथ हो गया, कोई मर गया, कितने केस है? जो गिने चुने फेमस केस है वो 100 से ऊपर है। क्या आप उस पे कौन सा टिप्पणी करना चाहेंगे? और रिगार्डिंग रनिंग अवे केसेस, आई एम नॉट रनिंग अवे, आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम सेइंग कि मिसयूज नहीं होना चाहिए किसी भी कानून का। अगर आप उसमें अमेंडमेंट लाते हो या चेंजेस लाते हो तो जनहित में होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, 2019 से पहले ये एक ऐसा कानून था जो एक एसोसिएशन को जो अनलॉफुल गैर कानूनी विधि विरुद्ध कार्य करता है उनके ऊपर ये कानून लागू होता है with reasonable restriction adhere to public order and good relationship with the state that need you to express your freedom of speech, your practices, आपके आजादी को बरकरार रखता है। लेकिन 2019 के बाद ये सारा चीज खत्म हो गया है। ये बात आप अच्छी तरह से नहीं सुना होगा। और किसी को टैग करना, ये वो है, ऐसा ग्रुप है, वैसा ग्रुप है, डेफिनेटली एक इंडिविजुअल का एक अपना आइडेंटिटी होता है। हमने नहीं कहा आप अर्बन नक्सलवाद हो, हमने नहीं कहा आप रूरल नक्सलवाद हो, हमने नहीं कहा कि आप कोई संस्था से संगठन से बिलोंग करते हो। हमने कहा जो गैर कानूनी विधि विरुद्ध लोग हैं, ऐसे संगठन, ऐसे एसोसिएशन को कर्टेल करने के लिए जो कि स्टेट सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, क्षेत्रीय अखंडता को उसके अगेंस्ट काम करता है, उसको कर्टेल करने के लिए। क्योंकि आप अभी अरुणाचल में हैं, अरुणाचल में बहुत सारे पॉलिटिकल टर्मोइल हो चुके हैं, टेरिटरी डिस्प्यूट हो चुके हैं, इंटरनेशनली, नेशनली, उसको कर्टेल करने के लिए। एंड माय डियर ब्रदर, देयर इज अ क्लियर कट थिन लाइन बिटवीन डिसेंट एंड सिडेशन। ठीक है, थैंक यू। समझिए, आप समझ गए होंगे। थैंक यू। हेलो, मेरा डोमिनिक सर को, बीजेपी स्पोक डोमिनिक सर को। ओके, हाँ सर, मेरा क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आज रिसेंटली आप देखा होगा कि तेचीपुरु को अगेंस्ट में अपुआपा लगकर बैठा हुआ है। सिंस वो सर्विस के लिए कॉल किया था सबको, तो ऐसे बीजेपी के स्पोक पर्सन आपको क्या लगता है कि उसका ऊपर में जो अपुआपा बैठा है वो सही है? तो सही है तो क्यों सही है? अगर गलत है तो ऐसे बीजेपी का ऐसे बीजेपी के आप स्पोक पर्सन है, तो ऐसे पार्टी आप लोग क्या स्टेप ले रहा है ये चीज का ऊपर में? अगर सही है तो क्यों सही है? अगर गलत है तो आप लोग पार्टी क्या कर रहा है इसका ऊपर? तेचीपुरु के अगेंस्ट में जो अपुआपा लगाया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्या वो सही है? अगर सही है तो क्यों सही है? अगर गलत है तो आपका पार्टी क्या कर रहा है इसका ऊपर में? इसमें पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड पर्टिकुलर पर्सन को लेके ये अपुआपा हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। यू हैव मेंशन्ड द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। आई डोंट थिंक दिस अप्लाइज टू अ पर्टिकुलर पर्सन, इट इज अप्लाइड टू ईच एंड एवरीवन। जिसको सरकार सोचेगा, समझेगा कि ये आदमी लोगों को डिसरप्ट करता है, बंद को कराता है और अनलॉफुल एक्टिविटीज करने के लिए उकसाता है लोगों को, ऐसे अगर सरकार फील होगा, नॉट ओनली तेचीपुरु, आई कैन ऑल्सो बी डिटेन अंडर अपुआपा। सो आई फील दैट जिसका नाम को आप ले रहा है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों का चल फिर में, मूवमेंट में, पब्लिक मूवमेंट में रोक टोक लगाने का, कहीं ना कहीं उनका भाषण में, उनका एक्टिविटीज में सरकार को
या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एहसास हुआ होगा, इसलिए आई थिंक APUAPA इज अप्लाइड ऑन हिम. थैंक यू. I hope it answers your question. To whom? Okay. हेलो. फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट द सीनियर्स. तो आपसे मेरा पहला सवाल यही रहेगा एडवोकेट जी कि जब APPAC का जब फियास्को का हम जब बात करता है तो रिटायरमेंट का सबसे ज़्यादा जो रिटायरमेंट जो जज का होता है उसका बहुत बड़ा एक रोल है जब कमेटी का बात करता है. तो आपको क्या लगता है बीइंग एडवोकेट होने के नाते आपको क्या लगता है कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में कितना रिटायरमेंट जज होगा, और जो APP इशू में जब रिटायरमेंट जज का बात करते हैं उसका मेन रोल क्या है, और आपको क्या लगता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में कितना रिटायरमेंट जज हो सकता है? थैंक यू. ये अभी हम लोग का अरुणाचल में कोई रिटायर नहीं हुआ है. सब सीनियर मोस्ट हम लोग का हाई कोर्ट का जज है नानी तागिया, और रिसेंटली कार्तिक एटे सर उसको जज बनाया गया हाई कोर्ट का. अभी कोई रिटायर नहीं हुआ है. बट देन यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन इन द कंटेक्स्ट ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ना, जो APUAPA का. तो यस, इन APUAPA देयर इज एन एडवाइजरी बोर्ड. तो उस एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन ये रहता है, एक रिटायर्ड जज रहता है, हाई कोर्ट जज. लेकिन क्या हुआ है कि हमने बताया था RTI फाइल किया था, तो 2014 में ये लागू किया गया था. सिंस 2014 दे हैव बीन क्या बोलते हैं रिन्यूइंग, उनको बार बार अपॉइंट किया जा रहा है. आई डोंट नो, इट्स वेरी शेडी. हमने डॉक्यूमेंट्स देखा था. तो जो एडवाइजरी बोर्ड सिंस 2014 में जो बनाया गया था उसको हर साल रिन्यू कराता है उसको ना, कि आपका टेन्योर बढ़ाते जा रहा है. और जब हम लोग का ये ऑर्डर को इशू किया गया था APUAPA का, उस समय को whatever ये क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट वर्क्स हुआ था, देयर वाज नो मतलब एक भी डायरेक्शन वहाँ नहीं गया था. जितना मेरे पास पेपर्स है उस हिसाब से तो लगता है कि एडवाइजरी बोर्ड वर नॉट इन्फॉर्म्ड, उन लोगों को प्रॉपर्ली इन्फॉर्म नहीं किया गया था. लेकिन आई रिटन कंडेमनेशन लेटर टू द न्यूज़पेपर्स, प्रिंट मीडिया पे लिखा था. बट देन उसके बाद गवर्नमेंट ने आर्बिट्ररली 30 डेज का मतलब रिक्वेस्ट मांगा है 30 डेज का ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये बोल के कि ये जो 40 या तो उससे ज़्यादा जो अरेस्ट किया गया, देयर स्टिल पोजिंग थ्रेट टू द ये क्या बोलते हैं डेली लाइफ ऑफ कम्यूटिंग या तो बिजनेस लाइफ को अभी भी थ्रेट है. तो आई नीड टू डिटेन देम फॉर अनदर 30 डेज. तो ये चीज़ को लेके लिखा गया, बट दैट वाज नॉट पास बाय द एडवाइजरी बोर्ड, इट वाज पास बाय द अंडर सेक्रेटरी थे. लेकिन मेरे पास आई डिडंट गेट एनी डॉक्यूमेंट दैट सेज कि एडवाइजरी बोर्ड ने हाँ किया था. बट देन द डॉक्यूमेंट दैट वेंट टू द एडवाइजरी बोर्ड ने ये बोला है कि नहीं, दे आर नो लॉन्गर नीडेड फॉर द डिटेंशन, क्योंकि एडवाइजरी बोर्ड को पता चल गया था कि ये डिटेंशन बेकार है, तो उनको रिलीज करने का ऑर्डर देता, तब जाके ऑर्डर हुआ रिलीज हुआ था. तो आई मेंशन इन द प्रिंट मीडिया पे देने के बाद देन आई केम टू द ये APC बिल्डिंग में, इसलिए ना चाहते हुए आना पड़ा, क्योंकि 30 डेज का जब आर्बिट्ररली लाया गया था. तो आई वांटेड टू इन्फॉर्म ऑल द पीपल कि देयर इज एन एडवाइजरी बोर्ड, उसका भी यूज नहीं किया जा रहा है. एंड देन इट्स बिटवीन द फ्यू ऑफिशियल्स ना, उन लोगों का बीच में लेटर आना जाना कर रहा है, एंड दैट्स हाउ दे आर एक्सटेंडिंग दीज ऑर्डर्स. और उस पर रीजंस भी बहुत शहरी तरीका से रीजंस दिया जा रहा है. तो दैट्स इट. ठीक है, I think with this we shall conclude, we shall wrap up this session. Unfortunately, time से ज़्यादा हम लोग 1 घंटा चला गया. We're supposed to. So once again, thank you so much every speaker present here, and I hope we had a fruitful discussion. इस साल हमने कोशिश किया है, पहली बार एडमा कुछ अलग करके देखने की कोशिश किया है. I don't know, I think I did it well, but वही टाइम के थोड़ा मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू हो गया. And once again, I thank you all the speakers present here. Please big round of applause for all the speakers. Good to Edgar. That was a lengthy but very engaging and thought-provoking session at the AEDMA Conclave 2020. Thank you so much to all the speakers and moderator, Mr. J.T. Tagam. Thank you so much for joining us today. And ladies and gentlemen, we are coming towards the end of our conclave, AEDMA Conclave 2022-23. But before that, today we are privileged to witness the participation of young minds from the Rajiv Gandhi University,
We are so glad that you all have joined us today. So let us take this opportunity to acknowledge and appreciate their enthusiasm, their dedication, their commitment towards their learning experience. So we can do nothing much for you, but we thank you for joining us today. So as a token of appreciation, we have participation certificates for all of you, for all the RGU students. So I think I would like to call upon on stage the students coordinator, Mr. Raja Bose, to kindly come on stage and receive the certificates. To do the honors, I would like to welcome on stage President AEDMA, Mr. J.T. Tagam. We thank the RGU students from different departments for joining us today. This is the participation certificate from Team AEDMA. Team AEDMA Conclave 2023. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we are coming to the end of this Conclave 2023. So before that, I would like to invite on stage Vice President AEDMA, Mr. Jackson Time, to propose the vote of thanks. Good evening, everyone. I know this is the job no one wants to do and no one wants to listen in any event. Board of Thanks को चलता नहीं है. फिर भी, on behalf of Arunachal Electronic and Digital Media Association, I stand before you today with a heart full of gratitude and appreciation. Our conclave digital media, as a catalyst for social change, has been a resounding success, I believe. And ये possible भी नहीं होता अगर आप सब इस जगह आज इकट्ठा नहीं होते. तो और एक बार आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, स्पेशली आरजीयू से जो बच्चे आए हैं, जो स्टूडेंट फ्रेंड्स आए हुए हैं, और उनका कोऑर्डिनेटर. थैंक यू राजा बोस, आपने सबको अच्छी तरह यहाँ लाए, और हम होप करते हैं अब जब वापस जाएंगे तो सही सलामत आप लोग अपना आरजीयू कैंपस में रहे, या जो अपने घर जा रहे हैं वो भी. और स्पेशली ऑल्सो थैंक्स टू हमारे जितने पैनलिस्ट हैं, सभी को धन्यवाद, और हमारा वॉलंटियर्स, ऑर्गेनाइजिंग टीम जितने भी हैं, और इन्वाइटीज से स्पेशल इन्वाइटीज, गेस्ट ऑफ ऑनर, चीफ गेस्ट, जितने भी लोग आए हैं सबको हम धन्यवाद करना चाहेंगे. और लास्टली जो हमारा मीडिया फ्रेटर्निटी से फ्रेंड्स है, और आने अपकमिंग जो जर्नलिस्ट है, जो आरजीयू से आएंगे शायद आने वाले समय में, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद. सो एज वी कंक्लूड दिस कॉन्क्लेव, लेट अस कैरी द स्पिरिट ऑफ डिजिटल मीडिया एज अ कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज विद अस इन ऑल फ्यूचर endeavors. Let us uphold the values of unbiased reporting, responsible journalism, and transparency, using digital media as a tool to empower society positively. Thank you. Thank you, everyone. Keep smiling, and see you next year. Thank you. With that, end of the AEDMA Conclave 2023. I hope that this conclave had been enriching participants, and we go back home with a food for thought to ponder on. Thank you so much for joining in. See you next year at the 12th AEDMA Foundation 2024. I would like to request all the speakers and the executive members of AEDMA for a quick photo session, for a formal photo session. I request each one of you to come up on stage. I request everyone